अब हम बात करेंगे सेल कल्चर हुड के लेआउट के हवाले से, क्योंकि सेल कल्चर हुड जो है दैट इज द मेजर एरिया विच is going to be the source of successful experiment or the source of a contamination. जब हम हुड के हवाले से बात करते हैं, हमारे पास डिफरेंट साइजेस के हुड अवेलेबल होते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क वी नीड टू डिसाइड कि हम किस साइज के हुड में काम करें. एक जनरल सा प्रिंसिपल है दैट द हुड शुड बी sufficient enough space, having sufficient enough space for one person और at a time एक ही रिसर्चर को हुड में काम करना चाहिए. एक से ज़्यादा रिसर्चर अगर हुड में काम करने के लिए आएंगे तो रिजल्ट इज गोइंग टू बी द कंटेमिनेशन और मिक्सिंग अप ऑफ द डिफरेंट कल्चर्स. सो हुड शुड बी इजीली क्लीनेबल. इट शुड बी क्लीनेबल आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड. नॉर्मली जो हुड अवेलेबल हैं लैब्स में यूज़ किए जाते हैं, दे आर ऑफ स्टेनलेस स्टील बिकॉज इनको क्लीन करना आसान होता है. इनमें फिर लाइटिंग शुड बी सफिशिएंट इनफ एंड विदाउट एनी ऑकवर्ड पोजीशन अ रिसर्चर कैन वर्क इन दीज हुड्स. इसमें जो हुड में जो अननेसेसरी रिक्वायरमेंट है मटेरियल्स की जिनके हमें इस्तेमाल की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, उनसे अवॉइड करना चाहिए. The workspace should be clean enough and uncluttered. That means जो चीज़ नहीं चाहिए हुड में उसको हुड में नहीं होना चाहिए. एक्सपेरिमेंट के वक्त आपको जो चीज़ें चाहिए सिर्फ उनको डिसइंफेक्ट करने के बाद हुड में रखा जाए, इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद उनको वहाँ से रिमूव कर लिया जाए. और हर चीज़ जो है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखें और उसको डायरेक्टली आपके विजन में साइट में क्लियर होना चाहिए उसको. बिफोर प्लेसिंग एनीथिंग in the hood, or let's start from before you start working at the hood, disinfect the hood using 70% alcohol, and then whatever goes inside the hood, it can be the culture flask, it can be the stand or anything, it should be disinfected using 70% ethanol and then wiping it clean. जो arrangement है, the arrangement of different materials within the hood it depends upon the researcher whether this is a right-handed person or the left-handed person. इस चीज़ को सामने रखते हुए we can decide which equipment, which component should be placed where. If we look at this picture gives us an idea that what should be placed where. The pipette man or the pipetter for a right-handed worker should be at extreme right side of the hood, like this is the pipette man. Then the culture flasks are placed in the rear back. The stands with additional reagents in the rear back. The flasks containing the culture or the fresh flask in the rear back towards the center. This one is going to be the waste beaker or cylinder, then the 70% ethanol. This is the waste reagent basket and these are the disposable pipettes. और ये जो area है in front, in the center, the large area should be clear enough to perform the cell culture steps. Now if we look at the arrangement of these required reagents or materials or the equipment, it can be shifted from right-handed person to the left-handed person or accordingly. The principle is we are starting from the right side, from clean towards left side, the dirty area. This reagent is sterilized stuff. Then these tube racks contain the tubes having the different growth factors or different reagents. This is also sterilized and clean. Then the cell culture flasks, these are the source of our experiment. Then we come across with the waste and any waste container containing the glassware, containing the plasticware or anything else. And these are the disposable pipette stands where whenever we need to have a new pipette, we can take it from here.
اور یہاں پہ اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ڈسپوزیبل پائپیٹس آر اسٹرلائزڈ، اور ان کا جو کور اتارنا ہے وہ اس کو جو ہے ڈی کنٹامینیشن کی طرف لے کے جا سکتا ہے. سو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل while taking these disposable pipettes for usage.